Hmm. Assalamu alaikum, I'm Fiza, and today we are going to talk about critical thinking and problem solving. I have these amazing ladies with me. Uh, I have Annette Ruth with me, and I have Shazia Noreen. Annette Ruth, she's from UK, and she speaks about well-being at work, and she speaks about education, and she speaks about women empowerment. And we have Shazia Noreen, who's an Islamic teacher for non-Arabs. So this was the short introduction for these amazing ladies. So first, I would like to address Annette. And hi, Annette. Hi. I hope you're good. Yes, I'm well, thank you. You're welcome. So Annette, firstly, I would like you to introduce yourself briefly. Okay, so I'm Annette Ruth Pearson, a teacher with over 30 years experience, as well as teaching. I'm an author, I'm a writer, and I'm very passionate about well-being and changing cultures of individuals and organizations. Right. So Annette, uh, to start with the very basics. First, tell me what is critical thinking. Just define. So, critical thinking is the way that you present evidence and ideas, that you analyze what you think. It's the use of a problem solving process. So, instead of making a decision rashly or quickly, you go through a process where you evaluate the evidence. And then, once you evaluate the evidence, then you make the decision. Right. Okay, so that was the basic definition of critical thinking. So now if you want to explain it briefly, if you want to, explore it more, so what would you say about it? So I think the first thing that when you're looking at critical thinking is about putting yourself into different scenarios. So for myself, as I said, I've worked in the education system for over 30 years. But it's only probably about the last 5 or 6 years that I've realized the importance of critical thinking in terms of the education sector. So when we work in education, so from the age of 5, 6 going upwards, we're almost taught what we need to say. So, like when we're preparing students for examinations, there's a right way to answer the exam questions. So, everything is directed from the teacher. But one of the things I found then by going out and mixing with the business community, the importance of critical thinking, the importance of preparing for unexpected scenarios. So I think for me, this really came to a head. So during COVID, I was able to have conversations with people from lots of different backgrounds, and there was a sad story that one of the presenters was sharing. He was sharing the story of this particular lady who had been to all the top universities in America. She had had the best education possible, and now she was having her annual review. And when she was having her annual review, this was the first time that she had been told about having to make an improvement in her life. And unfortunately, she didn't take it very well. And he was making the point that education prepares you to pass exams, but it doesn't prepare you for thinking on your own. It doesn't prepare you for using critical thinking. And that's when then I started to say that this is something I need to do with my learners and with other people, getting them to use critical thinking in day-to-day life. Right. So you said yourself that you just started to think about critical thinking a while before, right? Mm-hmm. So tell me how important is it for us to develop it in the younger kid, the younger generation? I think for it's very much like education, as I was saying before, is very passive. A lot of learners come into the classroom and expect the teacher is going to do the work for them. The teacher's going to put the information on the board and they're just going to copy it down into their books. Now, that's Right. not teaching them to be critical thinkers. It's because they're not making the decisions themselves. They've got to be able to feel that it's fine for them not to fail as they use. I use the word fail means first attempt in learning. They've got to know that it's fine that they can adapt themselves to new scenarios, that they've got to have an open mind.
that they've got to be able to self-direct and be self-disciplined and self-monitoring. And I think the key word here is to be self-directed, self-disciplined, self-monitoring. And that's why the critical thinking comes into is useful, because it's teaching them to start to think for themselves and be what we call active learners instead of passive learners. Yeah, right. Okay. So, how can we, enhance this skill in ourselves? So I think in ourselves, so if I use a scenario that you are thinking about changing careers. Now, when you're changing careers, you're not going to just wake up in the morning and decide, right, I'm going to go and do this particular job. You're going to look at, right, what are the skill sets that I have? Let me look at my CV and see what are the areas of strength and the areas of development. Your areas of strength, then you can then look and see, well, what are some of the occupations that I can use my skill set with? And once you've done that, then you can start to research what are some of these jobs and what do they entail. Like it might say that you might need to use decision making, or you may need to use, we're looking today about critical thinking and decision making. It may say to you that you've got to be good working as part of a team. So then you need to evaluate yourself. Do I have these skills? Now, if you have these skills, then you'll go and research more about that job. So what you're doing at each of the stages, you're researching, you're evaluating, and you're looking, is this for me? Is this not for me? It may mean if you've got the opportunity to go and spend a day in the organization to see what it's like, so you see it firsthand. So when you're using critical thinking, you're actually going through a decision-making process so that when you make Right. decisions, you're making them informed. So that's one of the ways of using critical thinking when you're looking for a new job. Okay. So, okay, and there is one thing you're explaining it very nicely, but when if you give an example, something that Mm-hmm. we can relate to, something that we can understand better, Okay. that would be great if you give an example, practical example. Okay, so one of the examples that I think when we were discussing before is about finding a life partner. If you're finding a life partner, you're not going to just walk down the street and say, right, this is the person that I want to marry. No, in terms of critical thinking, you will look and think, well, what are the qualities that I want in that particular person? What is it that I want them to be able to do? What is it that I'm looking for in a partner? In terms of the skill sets that they have, in terms of are they good at getting on with other people? Do they like traveling? So, like little things that are important to you. So if you are using critical Right. thinking, you will look at what are the things that you want in a life partner, and then you will say, do they have them? So this is what I'm saying. So in terms of critical thinking, you're making decisions. So I'm not just deciding, right, okay, I like this person, let me just go and marry them. Yeah. So you just don't make the decision based on one thing. You think Mm-hmm. about every possible aspect. Mm-hmm. Yes. Right. Yes. Mm-hmm. Right. So how do we check if if I have to think about it? How do I know that I am a critical thinking? How do I judge myself? How do I check it? I think the first thing you'd ask yourself is, so if you have something new to do you think first before you act, or do you act and then think? So that's the first thing. Like sometimes you have to do something and someone will just do it at spur of the moment. So if you just do spur of the moment and then afterwards you think, well, maybe I shouldn't have done that this particular way, then that's not a critical thinker. But if you think first and then act, that's someone who's a critical thinker, because what you're doing is you're making your decisions based on information and not just because it's something that feels good. Right. Okay. Since Annette, you work with students, you're a teacher. So Mm-hmm. can you tell us how to check, or a test for students for like critical thinking? I think one of the key tests for me with my students is I do work around. I say to them, "Are you a fixed mindset or do you have a growth mindset?" So fixed mindsets are you want to do things the same way. Fixed mindsets, you're scared. When we talk about being in your comfort zone, so you want to make sure that everything's always the same way.
When you have a fixed mindset, you say that I can't do this. You're not prepared to try. So those are the students which have a fixed mindset. They're the ones that don't have the critical thinking. But then you put the other side, those who have the growth mindset, they're prepared to do something new. They will say, I can do this, but I might need some help. They're the ones that says, okay, miss, let me go and work independently on this work instead of you telling me what needs to be done. Or they'll say, let me go and work with a pair of students on something and come and report it back to the class. So I think that's where, when you're looking at someone who's critical thinking, when you're looking at someone who has the growth mindset, they're prepared to take chances in life and they don't mind if things don't go according to plan because they know that they can still learn through that. I mean, like, we're all used to the light bulb. Imagine the person who invented the light bulb. It took him 1,000 times before he came up with a solution. So we say to the students, are you prepared to go the extra mile? To know that things aren't going to happen straight away. Sometimes you might need to try and try and try again. Yeah, try again. Right. Okay. So, in it, before our time ends, I would really like you to, give another two or three examples that we could relate to. Or So I also, go on. I'm sorry for interrupting. One example that if you could give from your own life, your own learning. So I think for me, one example from my own life where this was really important. So I have worked in education for about 25 years and went through head of department, different levels, and I found myself made redundant in a very short period of time. Now, for me, that was very traumatic at the time because it was like, what am I going to do next with my life? So I had to take some time out and evaluate the skills I have. And one of the skills that I had when they did a careers audit was to say to me that I was good at coaching. I was good at training and sharing with others information. And because of that, then I went and I trained up to be a coach. Now, if I hadn't been made redundant, I would never have gone on this journey to see how can I use my teaching skills in a new way. So by able to have someone work with me and show me that I could use my skills in a different way, that helped me in this decision making process. So I think that was for me that sometimes when you're going on this process, don't do it on your own. So so that would be one of the things I would say. And then a practical example, we've talked about finding a new job. We've talked about a relationship. One of the things also, another practical example, what should you study? You might be a university student and you're thinking about what should I go and study at university. So it's myself as well. I've been on this journey, what can I study? And because I've got a passion for well-being and about looking after yourself, therefore, again, a personal experience, I went and I trained up to be a well-being coach so that, I learned about well-being in a bigger scope and that well-being covers like what you taught in terms of wellness, financial, careers, your emotions, because it was a bigger picture. So this is where then, like in my own personal life, from experiences I've been through myself, then I've used them now to help others. So that's why I'm passionate about well-being, because I know at times my well-being wasn't catered for. So now I try and help other people to look after their own well-being. That's great. Okay, so that was really a good example. So again, coming back to that, I would really one last example. I think one last example that I'd like to say is around, like, for example, finding, like, I care for my mum at the moment, and it's like I'm going through trying to find providers that will help support us at home. And I think also with that, it's about getting recommendations from others. So when you're going through the decision making process, I'm talking to other people who are also caring for parents to see what works for them and what doesn't work for them. And that's also helping me to make the right decisions for my mum, because you want the best for your parents because they've done the best for you. So again, Right. that's another practical example in a real life situation that I'm going through now and where I'm using critical thinking.
Right, excellent going on. So I think some technical issues from Fiza side. Fiza, are you with us? Fiza, maybe some issues with the Fiza. Meanwhile, I would like to welcome Fiza Fatma also and Shazia Noreen once again. It has been a great explanation by Anit. Anit, I would really like to thank you for this detailed uh, explanation about the topics and all of the details. It's really great, and I would like you to stay because maybe we will change the medium of our language so the other community can also understand. But hopefully, you will get some idea, and you might in between if something is coming, you can share. Mhm. So I would like to welcome Shazia Noreen once again. So Shazia, can you please tell a little bit about yourself, and then we can proceed further. Okay, thank you so much for having me. This is Shazia Noreen. I'm a teacher from almost 9 to 10 years now. So it's great to be with you guys, and this topic is really, really very near to my heart as well, because this is really changing. Because when you think about your life, where you are going, from where did you start, and then you keep joining your dots, it literally helps you to become a better version of yourself day by day. So thank you so much. Hi Yeah. Shazia, I hope you're good. I'm good, Fiza. How are you? Alhamdulillah, I'm great. Okay, so Shazia, as you were listening to our conversation, the conversation we were having with Annette about critical thinking. So she gave some examples, and she also explained it really thoroughly. But I think everyone has a different definition of every term. So I would like you to explain what you think critical thinking is. Thank you so much. I would highlight one thing which Annette has said, and that's very, very important. She said that she got an opportunity to look at well-being in a deeper perspective. So I really like that, because even when we want to become a critical thinker, or let's say we want to learn from critical thinking, first of all, that should be something to fix our own life. So, well being is not only just because I'm good, I'm feeling good, or I'm looking good, but it's a deeper perspective. So, the more you incorporate critical thinking, it's going to help you to improve your life as well. For me, critical thinking is, the more you use your mind and thinking skills to find the truth, even if you don't like, but the more you try to find the truth, either it is related to your life or the work you are doing or the people around you, that is where I define critical thinking, that you help to find the truth in your life. Right. So, if I ask you, how do you think is critical thinking important for you in your life? Of course, it is very, very important, like especially being a teacher, critical thinking, creating, for example, activities for different students to meet the needs of the students. For example, you have to do a lot of critical thinking, that today the lesson I'm going to prepare, how it is going to meet the needs of all of the students. That's like work related. The planning, for example, how you can create the planners in a way that which is going to help a lot of students, not only just the high level students, but at the same time those students who are struggling. And in the same way, in our own personal life, day to day, when we keep looking at ourselves, how was my day, for example, that's also help us to improve. Like, I would like to say here one of the saying of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He said that the successful one is the one whose today is better than yesterday. Now, you cannot find out that my today is better than yesterday until unless you do critical thinking. You try to find out that Right. how was my day today? How did I spend 18, 19 hours today? So, in this way, it's not only helping us in our personal life, but at the same time in our work life as well.
At the same time, we are also talking about the problem solving. So critical thinking also help us to deal with day-to-day problems we face in our life. राइट, ग्रेट। तो शाजिया, अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात करें इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप कुछ शेयर करेंगे एक्चुअल एग्जांपल लाइफ में, या जो पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड, या किसी रिलेटिव या फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस पे बेस्ड हो? जी, अगर मैं अपने वर्क एग्जांपल्स में से एक प्रैक्टिकल मिसाल दूं तो एज अ टीचर हम लोग ब्लूम्स टेक्सोनोमी इस्तेमाल करते हैं। अब ब्लूम्स टेक्सोनोमी जो है वो उसके 6 लेवल्स हैं। लाइक जो फर्स्ट 2 लेवल है वो रिमेंबर और अंडरस्टैंड है। उसमें बच्चे जो कुछ भी अपनी बुक से रिलेटेड, टेक्स्ट बुक से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसी पे ही बेस्ड होते हैं। बट देन व्हेन यू मूव ऑन, द नेक्स्ट लेवल इज अप्लाइंग, देन एनालाइजिंग, देन क्रिएटिंग। तो उसी लिहाज से जब बच्चे जो है अपना लेवल इंक्रीज करते हैं तो सेम टाइप ऑफ असाइनमेंट, सेम टाइप ऑफ वर्क इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट, क्योंकि अब जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी थिंकिंग स्किल्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एज ए टीचर हमारी पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि हम इवन के एग्जाम्स में या डे टू डे लाइफ में जब हम क्वेश्चंस उन क्लास में क्रिएट कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ सिंपल क्वेश्चन नहीं हो। फॉर एग्जांपल, let's say, because I'm an Islamic studies teacher, so let's say if I'm asking a question, what are the 5 pillars of Islam? This is just a simple question. It is not going to let my students know कि मतलब वो माइंड नहीं इस्तेमाल करेंगे। इट्स जस्ट लाइक अ क्रैम्ड आंसर जो कि उन्होंने याद किया हुआ बचपन से कि 5 जो हैं कौन से पिलर्स हैं। लेकिन अगर मैं उनसे ये क्वेश्चन करूंगी कि लाइक हाउ दीज 5 पिलर्स आर गोइंग टू इफेक्ट देयर लाइफ, or how they're going to apply these 5 pillars in their life, now they will be using their thinking skills, their critical analysis. For example, एक स्टूडेंट कह सकता है कि मैं जो है वो नमाज में अच्छा नहीं हूँ। एक स्टूडेंट कह सकता है कि आई एम ट्राइंग टू फॉलो अदर थिंग्स बट आई एम सफरिंग इन, लाइक आई एम स्ट्रगलिंग टू फास्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमदान। सो दैट्स हाउ, लाइक वर्क इन्वायरमेंट में एज अ टीचर जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग हमें हेल्प करती है। और पर्सनल लाइफ में इफ़ आई वुड लाइक टू शेयर वन आइडिया, especially changing of my field, because I wanted to become a doctor, and till grade 12 FSC तक मैंने जो है मेडिकल साइंस पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एंड एट दैट टाइम आई वाज अटैच्ड टू दिस आइडिया इमोशनली कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, एंड आई वॉज नॉट रियली गुड इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। लेकिन उस वक्त जो है बिकॉज आई वॉज इमोशनली अटैच टू दिस आइडिया कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना ही बनना है, आई वेस्टेड 2 more years आफ्टर माई FSC। दोबारा से रिपीट करो, मार्क्स अच्छे लो एंड दिस एंड दैट। सो एट दैट टाइम आई यूज टू हैव वन टीचर। उन्होंने मुझे कहा कि यू नो योर एप्टीट्यूड इज़ नॉट फॉर साइंस। यू नो, शी सॉर्टेड दैट आउट कि आपका एप्टीट्यूड जो है वो किसी और सब्जेक्ट के लिए हो सकता है, लेकिन साइंस स्टूडेंट के लिए एक स्टूडेंट का जो एप्टीट्यूड डिफरेंट होता है। आई डिड नॉट टेक दैट एडवाइस एंड आई डिड नॉट थिंक ओवर इट। आई वाज जस्ट इमोशनली अटैच्ड टू द आइडिया। सो आई फील कि अगर उस वक्त मेरे पास ये नॉलेज होता कि हमें जो अपनी ही थिंकिंग होती है उसको क्वेश्चन करना चाहिए, अपने एक्शंस जो ज़िंदगी में चल रहे होते हैं उनको क्वेश्चन करना चाहिए कि इफ़ आई कैन नॉट पास और इफ़ आई कैन नॉट गेट गुड ग्रेड्स तो मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी में तो नहीं जा सकती। एंड एट दैट टाइम इतनी वो भी नहीं थी, यू कैन से सेंस नहीं थी कि आप इसको एक्सेप्ट करो इस चीज़ को कि हाँ आई कैन नॉट अचीव 80% और 90%। सो आई टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू कम बैक what exactly I wanted to do, or what exactly I'm doing now, for example. तो आई थिंक जो क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो आपको हेल्प करती है कि आप अपनी जो इवन की फील्ड अगर चेंज भी कर लें, जैसे एनएथ ने भी कहा कि इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ओवरनाइट डिसीजन कि सुबह उठ के आप कहें कि आज मुझे डॉक्टर बनना है तो कल जहाँ आप जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ के टीचर बन जाएं। लाइक यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि इट्स जस्ट अ टोटल डिफरेंट स्विच ऑफ दीज टू फील्ड्स, बट आई Yes, टुक अ right. लॉन्ग राउट फॉर दैट। सो I think proper guidance, having critical analysis of the situation can help the students to find, better and little bit quicker a right decision. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, ग्रेट। अब भाई, अगर मैं आपसे एक थोड़ा सा
काइंड ऑफ क्रिटिकल क्वेश्चन ही पूछूं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आई एम अ क्रिटिकल थिंकर और नॉट, या कोई बंदा अगर आप किसी को जज कर रहे हैं तो कैसे जी पता जी। लगेगा कि ये क्रिटिकल थिंकर है या नहीं? उसमें उसमें भी देखिए बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि मिसाल के तौर पे आपकी ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम लेट्स से, उसमें आप उसको अपनी सिचुएशन को कितनी दफ़ा दोबारा-दोबारा एनालाइज़ कर रहे हैं। क्या आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और सोर्सेज से? बिकॉज़ अगर मैं जो सारी सिचुएशन जो है वो सिर्फ़ अपने साथ ही डिस्कस कर रही हूँ और इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ अपने माइंड से ही ले रही हूँ, देन मे बी आई एम नॉट एक्सपीरियंस्ड इनफ टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम टू द सॉल्यूशन। तो एक क्रिटिकल थिंकर को जो है वो उसके पास वाइड वैरायटी ऑफ सोर्सेज होना चाहिए कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर करे, और इसी तरीके से उसको उन लोगों के साथ भी बातचीत करनी चाहिए जो कि उसके साथ डिसएग्री करें। सो जब आप डिसएग्रीमेंट सुनते हैं किसी शख्स से कि अगर ये इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है और कुछ लोग जो हैं वो मुझे इस तरीके से गाइड्स कर सकते हैं, तो आपके अंदर ये एबिलिटी भी होनी चाहिए कि आप जो है वो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी लोगों का सुन सकें। जैसे मैंने आपको अपनी लाइफ से मिसाल दी, मेरी टीचर ने मुझे कहा कि यू डोंट हैव एप्टीट्यूड फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सो हाउ यू आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डाइजेस्ट दैट, यू नो। सो एक क्रिटिकल थिंकर जो है वो जो कॉन्फ्लिक्ट है या फिर डिफरेंट टाइप की जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसको भी उसके अंदर ये स्टेमिना होता है कि वो सुन सके। और इसी तरीके से एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि एक जो क्रिटिकल थिंकर है उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने आप को गलत कह सके। जो वो सोच रहा है, वो जो सोच रही है, जो क्योंकि हमारा माइंड जो कुछ सोचता है ज़रूरी नहीं कि वो सब कुछ ठीक हो। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप क्रिटिकल थिंकर हैं कि नहीं, देयर आर मेनी अदर पैरामीटर्स एंड दीज आर जस्ट सम ऑफ देम, कि अगर आप गलत हैं So देन these यू are शुड just few of एबल them. टू से, हाँ यू शुड बी एबल टू से कि हाँ मैं गलत हूँ, Right. मुझे अपना जो है वो जो अपना आपको you है सब वो firstly you have to analyze yourself. उसके बाद you can analyze the situation. हमारे पास एक बहुत एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल है प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से। जब वो ट्रूथ को सर्च कर रहे थे, जब सच्चाई की तलाश में, वो अल्लाह की तलाश में थे, तो उस वक़्त वो अपनी अपनी लॉजिकल थिंकिंग इस्तेमाल कर रहे थे। जब उन्होंने सूरज को देखा, जब चाँद को देखा, सितारों को देखा, तो उन्होंने कहा कि ये खुदा हो सकता है, ये खुदा हो सकता है। और फिर उसके बाद अपनी ही लॉजिकल उन्होंने एनालॉजी इस्तेमाल करके कहा कि अना ला उहिब्बुल आफिलीन, मैं जो है उनसे मोहब्बत नहीं करता जो कि डूबने वाले हैं। तो आप देखिए उससे कोई उनके पास डिवाइन गाइडेंस नहीं आ रही थी, लेकिन ही वाज़ यूज़िंग हिज़ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। तो इन द सेम वे हमें भी अपनी जो है अपनी Right. लाइफ को खुद एनालाइज़ करने का जो है हुनर सीखना चाहिए, सो दैट हम जो है सच्चाई जो भी हमारी ज़िंदगियों की हम उसको तलाश कर सकें इंशाल्लाह। बिल्कुल। जैसे ही पहले एनेट भी कह रही थी कि एक वो स्टूडेंट्स होते हैं कि अगर हज़रत इब्राहीम भी वैसे ही करते कि बस जो जिस तरफ सब जा रहे हैं मैं भी उसी तरफ जाऊँ और वो हुँ। ना सोचते उस तरफ और वो ना आते, तो आई थिंक हर सिचुएशन में हमें हर एस्पेक्ट से सोचना चाहिए, उसके प्रोज़, उसके कॉन्स हर चीज़ को सामने रख के एंड देन व्हाटएवर द हमें डिसीजन लेना चाहिए। और फिर इसमें वेरी आप ये देखिए इंपॉर्टेंट। कि सम टाइम हम अपने एनवायरनमेंट की बहुत कंप्लेन करते हैं कि जी हमारे हमें ऐसा माहौल नहीं दिया गया जिसमें हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को नर्चर किया जाता। ये एक्सक्यूज़ हो सकता है बहुत सारे लोगों की, लेकिन एट द सेम टाइम जब आपको मौका मिले तो इवन आपके पास अगर एनवायरनमेंट नहीं भी है, स्टिल यू कैन बी द लीडर। अगर हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल को ही देखें, तो उन्होंने ना सिर्फ़ खुद क्रिटिकल थिंकिंग की, बल्कि बाद में उन्होंने अपनी कौम से भी कहा कि ये जो तुम पूछते हो जिनको, मतलब क्या तुम लोग श्योर हो कि यही खुदा है, जो कि जिनको तुम लोग खुद अपने हाथों से बना रहे हो? तो वो ना सिर्फ़ खुद ऐसा सोच रहे हैं, बल्कि वो अपनी कौम को भी इस चीज़ पे मोटिवेट कर रहे हैं कि वो अपना माइंड इस्तेमाल करें। उनको भी वो राइट बिल्कुल। ओके शाज़िया, आप मुझे प्लीज़ ये बताएँ कि वो हू आर द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल जो कि क्रिटिकल थिंकिंग को अडॉप्ट करते हैं? सॉरी अगेन? ओके, आप मुझे ये बताएँ कि हाउ कैन वी एनहांस और डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग इन आवरसेल्व्स? Considering how important it is, so how can we enhance it?
वेल सबसे पहले तो ये है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी सिचुएशंस है चल रही हैं, आप उनको एनालाइज़ करें, बार-बार एनालाइज़ करें। किसी अच्छे से जो कि आपसे ज़्यादा तजुर्बाकार है, आप उससे मशवरा लेने की कोशिश करें। लेट्स से अगर जॉब सिनेरियो है, आप जॉब चेंज करना चाहते हैं या फ़ील्ड चेंज करना चाहते हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं और ग्रेड 12 के बाद आपको एफएससी के बाद आपको चूज़ करना है कि वेयर यू नीड टू गो। ग्रेड 9-10 में पाकिस्तान में जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो अपनी सिलेक्शन करना शुरू कर देते हैं सब्जेक्ट की। तो उसमें Right. पहले खुद भी सोचें कि वो क्या उनको पसंद है। इसके अलावा फिर फैमिली की भी पसंद नापसंद को देखें, एनालाइज़ करें, बार-बार सोचें कि ये जो मेरी चॉइस है, ये क्या इमोशन की बेस पर है या फिर ये लॉजिकल बेस्ड है। जैसे मेरे पास But एक I स्टूडेंट think है जो Shazia, uh, जी, I think we were talking about that, we should analyze the situation and we should analyze again and again. But I think when you're thinking about something too much, so it can also go the other way and you can also go into, overthinking, right? हाँ जी, So हाँ जी हम और उसको उस चीज से कैसे बचाएं? बहुत ज़बरदस्त सवाल है। ओवरथिंकिंग के लिए ये है कि देखें अगर आप सिर्फ़ अपने माइंड से बातें करते रहेंगे, तो देन यू माइट नॉट फाइंड द सॉल्यूशन। तो इसीलिए जैसे मैंने पहले Yeah, कहा कि right. ऐसे लोगों से बात करें जो ज़्यादा तजर्बाकार हैं। रीड करें अपने इश्यू पर कि जो भी आपका इश्यू है, आप उसके ऊपर मज़ीद जो है वो डेटा इकट्ठा करें, इस पे उस टॉपिक पे रीड करें ताकि सिर्फ़ अपने ही माइंड में नहीं रहें, अदरवाइज़ यू माइट डू समथिंग व्हिच इज़ नॉट राइट। अब जैसे मैं Exactly. आपको एक मिसाल दे So, रही थी कि मेरे पास एक स्टूडेंट था तो ही केम टू मी एंड ही सेड कि मिस आई वांट टू बिकम अ पेंटर एंड माय फैमिली वांट्स मी कि आप इंजीनियर बनो। तो मैंने फिर उसके सामने जो है वो लॉजिकल क्वेश्चन रखे। मैंने कहा कि आपको क्या लगता है कि आपको पेंटर क्यों बनना चाहिए और इंजीनियर क्यों बनना चाहिए? एंड इन टर्म्स ऑफ लाइक ऑल द एस्पेक्ट्स मनी वाइज एज़ वेल, प्रोफेशन वाइज एज़ वेल, स्कोप वाइज एज़ वेल। तो इन सारी चीज़ों में आप जो है वो इन पॉइंट्स को रखें सो दैट यू कैन फाइंड आउट व्हाट वर्क्स बेटर फॉर यू। एंड एज फार एज पेंटिंग इज़ कंसर्न फॉर एग्जांपल, यू आल्सो नीड टू फाइंड आउट कि ये सिर्फ़ आपकी हॉबी है या पैशन है? या you really want to take it as a profession as well, क्योंकि sometime right. Yeah, स्पेशली टीन एज में हम समझते हैं कि जो हमारा पैशन है या हमारी लाइकिंग है वो हमारा प्रोफेशन भी है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स नॉट राइट। it's not right. Exactly. That's true. Okay. So, Shazia, it would be really great अगर आप, इस तरह की कुछ और प्रैक्टिकल एग्जांपल से हमें, समझाएं. या जी, रियली इट्स गोइंग रियली ग्रेट। और इस मौके पे मैं चाहूँगा कि हम फिज़ा को भी वेलकम करें। जी, और मीनवाइल आप अपनी जो ताकि मेरे लिए भी आसानी हो जाए। या या जी बिल्कुल जी, वेलकम फिज़ा, फिज़ा फातिमा। सो वी आर गोइंग टू गिव हमारी डिस्कशन को एक अनदर ट्विस्ट देने के लिए वेलकम वेलकम टू दिस सेशन फिज़ा। Thank you so much, Liaquat bhai. So, Fiza, if you can just tell a few words about yourself, and then we will go back to Shazia for some examples, and then we will get back to you. तो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें अपना, प्लीज। First of all, I would like to wish good evening to everybody जो भी नवाफिज को फॉलो कर रहे हैं और जो भी हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं, वेलकम टू आवर वेरी इनोवेटिव चैनल। और आज का जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग, और मेरा यहाँ पे होना हैज़ अ लॉट ऑफ रिसेम्बलेंस टू इट। मैं नवाफिज से काफ़ी टाइम तक जुड़ी हुई हूँ। आई एम समबडी हु इज़ कमिंग विद अ गुड एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग फील्ड। और नवाफिज से मेरा जो रिलेशन रहा है, इट्स मोस्टली हेल्पिंग एंड मेंटोरिंग डिफरेंट कैंडिडेट्स जो जॉब सीकर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब भी कोई जॉब्स आती हैं मेरे पास, तो आई शेयर इट अक्रॉस थ्रू नवाफिज पोर्टल। एंड लाइक ऑलवेज, जो भी मैं हमेशा कहती हूँ, आई स्टिल रिपीट द सेम, आई वुड वांट एवरीवन टू फॉलो नवाफिज। एंड जितने भी हमारे जॉब सीकर्स हैं, जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, प्लीज़ फॉलो अस, ताकि आपको ना कि अपने सीवी के हवाले से जवाब मिले, बट ऑल्सो हाउ यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। इनफैक्ट आज का जो सेशन है उसमें भी आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। So please follow Nawafiz, and
You can follow me also. And I'm very much on LinkedIn. You all can follow me on LinkedIn. और कभी भी आपको कुछ भी नवा ऑफिस से चाहिए हो तो you can go to हमारा नवा ऑफिस का जो YouTube चैनल है उसको follow subscribe भी करें and share it across with candidates and follow us on LinkedIn as well. Great, great. So thank you once again. So Shazia, over to you for some examples, and then we will get back to Fiza. हाँ जी, तो मैं मिसाल ही देना चाह रही थी कि जिस भी हम प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, लाइक वी आर मोर देन अ टीचर, वी आर मोर देन अ मार्केटिंग इंजीनियर, वी आर मोर देन एनी प्रोफेशन वी आर इनटू। तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो सबसे पहले तो आप अपने ऊपर खुद अप्लाई करें, अपनी वेलबींग को देखें, अपने माइंड को चेक करें, आप कितने पॉजिटिव हैं, आप कितने नेगेटिव हैं, अपने आप को खुद एनालाइज करें ताकि आप अपनी जो ज़िंदगी को एक बेहतर तरीके से गुजार सकें। जो भी अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं, आप उनके ऊपर शुक्र कर सकें। एंड दिस इज़ नॉट पॉसिबल अंटिल अनलेस वी एनालाइज अपने आप को इस सिचुएशन में देखना कि मुझे अल्लाह ताला ने कितना नवाजा है, और इसी में जब आप ये सोचते हैं तो फिर क्या होता है कि आपके अंदर शुक्रगुजारी बढ़ना शुरू होती है। तो क्रिटिकल थिंकिंग इज़ नॉट ओनली टू अप्लाई दिस इन द जॉब सिनेरियोज एंड नॉट ओनली इन सोसाइटी। सबसे पहले इसको अपने ऊपर अप्लाई करते हैं सो दैट आवर टुडे इज़ बेटर देन यस्टरडे इंशाल्लाह। Inshallah. Okay. So, going back to Fiza. Hello, Fiza. Hi Fiza. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ. How are you? I just feel I'm we are matching too much today. Even the scarf color is the same. same हमने names बिल्कुल and क्रिटिकल same थिंकिंग scarf नहीं की colors. थी आने से पहले. हमने हम बस आ गए. Right. हमने कोई twinning नहीं की. Exactly. Okay. Fiza. So, So, firstly, sorry to interrupt. What I was thinking that instead of Annette to wait for a long time, we can conclude with Annette and then show so she can leave because she might have to go. Yeah. So Annette, how are you? I'm fine, thank you. It's been a really interesting listening to the conversation today. Yeah, and sorry for language issues It's not a because problem. It's an international platform, so it's good that you're sharing this out with a wider audience. yeah. So what I thought that instead of you waiting for the long time, we can conclude your point of view, and then if you want, you can. If you want to stay or you want to leave, then it will be up to you. So we would like to have the final remarks from your end, uh, uh, and then we will continue with our program. Okay, well, I think final remarks from me is that we've been talking here all to do with critical thinking and decision making. One of the other tools that you can use that I think we're going to be discussing at a later time is the 6 hacks of Debonnaire. That also helps to boost productivity and creative thinking. So in this, the hats are 6 different colors. So you have a white hat if you're a logical thinking. You have a red hat if you're working on intuition and instinct. You have a black hat if you're being cautious. You have a yellow hat if you're being optimism. You've got a green hat for creativity and the blue hat for control. Now, when we're talking about critical thinking, we're talking about looking at something from different points of view. So therefore, these hats allow you to look at the same question from these different points of view. And then once you've made the decision, looking at these 6 areas, then you can make the final decision. So I think one of the things that we've discussed here today is that when we're using critical thinking, it's a decision-making process where we look at things from different points of view and not just one view. Excellent, great, great. So, Shazia, I would like you to say final words for Annette so she can have memory. Thank you so much, Annette, for having with us. And I really like the aspect, and I'm gonna read it a little bit more about it. The deeper aspect of social being, well-being you mentioned.
like you mentioned about financial well-being, psychological well-being, and the other aspects. So yes, you're very right. First of all, when it comes to critical thinking, we should be first of all solving our own issues, our own either mental issues, either it's physical issues, financial issues, whatever the case may be. So thank you so much for highlighting that. Thank you for having me as your guest today. Thank you. And now, Fiza Fatma, I would request you to say a few words for Annette and what were her thought, and then we will say goodbye to Annette. Hi, Annette. It was nice listening to you. And I couldn't hear the initial parts of it, but yes, I did hear about the wellness and financial point of view as well. What I believe in critical thinking, like in your conclusions also that you mentioned, that it's just not one step when you're making a decision making process. It's an entire thoughts and entire analysis that you do, entire data that you collect to make your decision making process. What I believe about this conclusion is that what I can make out of it is that critical thinking is regarded as a judgment in that case, because if you're making a judgment, it is the end process of your thoughts. That's why we use critical thinking in decision making processes. So I will definitely go through your session once more to see what all you said, and I will get in touch with you via LinkedIn or via WhatsApp, and we can discuss further more on decision making and critical thinking too. Thank you very Thank you for much. being here. Thank you for having me. Okay, thank you, Annette. Thank you very much, and hopefully we will see you in the next session with more detail of Edward de Bono, six heads. Exactly. So Okay. we are still working on the brain. The brain is the biggest, to say, the most complicated machine in the Mm-hmm. universe is our brain itself. Mm-hmm. So, and we are still working on our thoughts. So most probably we will learn more about the thinking, how to remember things, how to learn, how to improve. So everything is linked with the Mm-hmm. brain and thoughts. So once again, thank you very much, and hope to see you in the next session. Thank Okay. you. Take care. Thank you very much. Bye. Bye. जी फिजा, over to you for your thoughts के क्या है एक्चुअल में क्रिटिकल थिंकिंग, और स्पेशली जो क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ की जाती है असेसमेंट में, एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयर हायर करते हुए, और इवन आई वाज सीइंग ऑन लिंक्डइन के देयर इज अ सर्टिफिकेशन आल्सो कि आप क्रिटिकल थिंकिंग के डिफरेंट टॉपिक्स पे सर्टिफिकेशन कर सकते हैं. If you allow me, I will just share my screen also, so people can see what actually I am talking about. Just it will take a few clicks. Okay, so you can see the screen, I think. और ये वो अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग को सर्च करते हैं इस पे, तो आपको डिफरेंट सर्टिफिकेशन मिलेंगे. फॉर एग्जांपल, दिस पर्सन हैज क्रिटिकल थिंकिंग फॉर बेटर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग. इसी तरह another person has this certification on critical thinking and problem solving. Or if you will see the full list of these items, you will see build your critical thinking skills. तो बहुत सारे सर्टिफिकेशन और बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो इस पे अवेलेबल हैं. Right, this was just to give you a bit idea about के एम्प्लॉयमेंट साइड पे और बाकी एंगल से क्रिटिकल थिंकिंग जो है उस पे क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, और आप इसको फर्दर कहाँ कहाँ कैसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. तो ओवर टू यू फिजा फॉर मोर हाइलाइट्स ऑन कि क्रिटिकल थिंकिंग का हमारी लाइफ में रोल एक्चुअली क्या है, और हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, और हम ये कैसे एक बेटर थिंकर बन सकते हैं. Thank you so much, Liaquat bhai, for this question. Actually, में critical thinking
इट्स ओनली वन टाइप ऑफ थिंकिंग, ये सिर्फ एक ही किस्म की थिंकिंग है। हमारे इंटायर लाइफ में बहुत सारी टाइप ऑफ थिंकिंग होती है जो हम अप्लाई करते हैं इन लाइफ। जैसे एनेट ने भी अभी कुछ देर पहले बोला कि कुछ हैट्स होते हैं जो हम पहनाते हैं। एंड व्हाट आई वुड समराइज इज कि क्रिटिकल थिंकिंग इज इन टोटल अ थिंकिंग ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंकिंग। तो हमारे अगर हम बोलें कि और कौन कौन से टाइप के थिंकिंग है, तो देर इज लॉजिकल थिंकिंग, देर इज क्रिएटिव थिंकिंग, देर इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, देर इज कॉग्निटिव थिंकिंग, देर इज इंट्यूटिव थिंकिंग। तो हम अलग अलग टाइप के सोच होती है। उसी तरह से क्रिटिकल थिंकिंग के भी टाइप्स होती हैं। तो आप क्रिटिकल थिंकिंग जैसे अलग अलग सिचुएशंस में अप्लाई करते हैं, पर्सनल होती है, प्रोफेशनल होती है। तो उसी तरह से जैसे आपने अभी दिखाया कि क्रिटिकल थिंकिंग के अलग अलग सर्टिफिकेशंस हैं, इट इज़ बिकॉज हमारी सिचुएशन सिमिलर नहीं होती। हमारी जो लाइफ की सिचुएशन होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है। इट मे बी फॉर जैसे उसमें था जजमेंट के लिए, फिर उसमें था प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। एंड इसी तरह से जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई टास्क है, कोई किसी को फाइंडिंग करनी है, किसी को कुछ डिटेक्टिव वाला काम करना है, तो क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाइज टू डिफरेंट सिचुएशंस। आई वुड से कि आप जब क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हो तो आप ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो थिंकिंग है उनको भी माइंड में रख के अपनी क्रिटिकल थिंकिंग करें। जैसे मैंने अभी एनेट को भी बोला, इट इज़ अ जजमेंट दैट यू टेक, इट इज़ द एंड कंक्लूजन ऑफ योर आपकी जो भी सोच है उसकी वो एंड कंक्लूजन होती है। आप जब भी क्रिटिकल थिंकिंग करते हो तो आप काफ़ी डेटा, काफ़ी एनालिसिस करते हो, काफ़ी लोगों से पूछते हो, सजेशंस लेते हो, ओपिनियंस लेते हो, आप बार बार उसे स्टडी करते हो, एंड फाइनली व्हेन यू थिंक दिस इज गोइंग टू बी द राइट डिसीजन, देन यू टेक दैट डिसीजन। एंड वो प्रोसेस को हम क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। सो आफ्टर यू एक्चुअली मेक अ क्रिटिकल थिंकिंग का आपने जो कंक्लूजन निकाला है, इट कैन नॉट बी रॉन्ग। ठीक है, अनलेस एंड अनलेस वो आपको किसी क्या कहते हैं कुछ नेचुरली हो गया हो, या फिर कोई गॉड टाइप की कोई इवेंट हो गई हो, किसी का डेथ हो गया हो, तो अनलेस समथिंग लाइक दैट हैपेंस, योर क्रिटिकल थिंकिंग जो आपने किया है, इट्स आंसर कैन नॉट बी रॉन्ग। तो अलग अलग जो लोग इसको अप्लाई करते हैं, जॉब सीकर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, सर्जन्स होते हैं, हम पर्सनल लाइफ में भी क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करते हैं। एज टीचर्स होती हैं, मदर्स होते हैं, फिर बेटियां होती हैं, बेटे होते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग टाइप की सोच डेवलप करके क्रिटिकल थिंकिंग मतलब अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। Right, right. So, meanwhile, I would request कि हम सेशन को कंटिन्यू रखते हुए फिजा फातिमा के साथ हम अपनी डिस्कशन जारी रखेंगे, बट उससे पहले आई वुड लाइक कि शाजिया, अगर आप अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे सकें इस टॉपिक पे, तो देन वी विल कंटिन्यू फर्दर। आपके क्लोजिंग रिमार्क्स। वेल, हम लोग जो बात कर रहे थे सिक्स हेड्स की, सिक्स हेड्स ऑफ डी बोनो, तो उसमें जो डिफरेंट टाइप की हेड्स हैं वो एक्चुअली ये भी एक बहुत, आपने पहले सवाल किया ना कि किस तरीके से हम अपनी क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह का मटेरियल से गो थ्रू होना, और स्पेशली एज अ लाइक बीइंग अ टीचर फॉर एग्जांपल, हम लोग स्टूडेंट्स की असेसमेंट्स भी इस पैटर्न पे क्रिएट करते हैं, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, क्रिएटिविटी, बेनिफिट्स, कॉशंस, फीलिंग्स एंड प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, अगर आप उसकी जो सिक्स हेड्स को जो है वो डिस्कस करें, जैसे कि अनैथ कह रही थी कि हर हेड का एक डिफरेंट कलर भी होता है, तो इस तरह की रीडिंग करने से भी जो हमारी थिंकिंग स्किल्स इम्प्रूव होती है, क्रिटिकल थिंकिंग की जो पावर है वो इम्प्रूव होती है। और बाकी अगेन आई विल एम्फसाइज टू ऑल ऑफ द व्यूअर्स हु आर विद अस कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है, बल्कि कल फिज़ा ने एक बहुत प्यारी बात की थी कि अपनी थिंकिंग को ही थिंक करना कि मैं कैसा सोच रही हूँ या मैं क्या सोच रही हूँ। सो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प इंशाल्लाह ऑल ऑफ अस, ना सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ में बल्कि इंशाल्लाह। अपनी वर्क लाइफ में भी। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। नाउ आई वुड मैं आपका एंड में फिर से शुक्रिया अदा करूंगा
Okay, thanks for your time and support for this especially on session. और in addition जो आप इसको एक kind of Islamic point of view से भी explain कर दी हैं चीज़ों को, that's really great. तो फिजा, I would request, I need your final comments about शाजिया, तो हम शाजिया को goodbye कह सकें. शाजिया हैज़ बीन एन एक्सीलेंट स्पीकर एक्चुअली। वो जो भी उन्होंने थॉट यहाँ पे डाले हैं, स्पेशली जैसा आपने कहा रिलेटेड टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, हज़रत इब्राहिम की उन्होंने बात की, विच इज़ वेरी ट्रू। और आई थिंक जितना हम रिलीजन को भी इन्वॉल्व करते हैं इनटू आवर थॉट, आई थिंक उतनी ही हमारी थॉट पॉजिटिव भी होती है, उतनी हमारी सोच और भी होती है। तो थैंक यू सो मच शाजिया कि आपने अपनी सोच हमें यहाँ पे बताई, एंड वी विल थिंक ऑन योर थिंकिंग ऑल्सो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और जैसे आपने कहा ना कि मतलब रिलीजन तो सिर्फ 5 वक्त की नमाज नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। सो एग्जैक्टली। ऑफ कोर्स लाइक द मोर वी रिलेट, इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू हेल्प अस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच। Inshallah. Okay, मोस्ट thank you Shazia, thank you very अस्सलाम much. Salam. जी फिजा, I can see, I can feel के you are having issues on your on the back end, but according to the situation, I think you can give your final remarks, and then we will wind up this session. So over to you, Fiza Fatma, for final remarks. जी लियाकत भाई, राइट नाउ मुझे भी फिजा, क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ रही है। बट बिफोर गोइंग फिजा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। In this whole session, we've been talking how important critical thinking is, how important of a life skill it is, right? और हमें कितनी ज़रूरत पड़ती है और कितना important है कि हम अपने अंदर इस चीज़ को डेवलप करें। बट मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि कैन क्रिटिकल थिंकिंग बी नेगेटिव ऑल्सो? क्या ये एक नेगेटिव वे में भी हो सकती है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। क्रिटिकल थिंकिंग जैसे मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले, कि जो डिसीजन आप लेते हो वो रॉन्ग नहीं हो सकती। तो क्रिटिकल थिंकिंग कैन नॉट गिव यू अ नेगेटिव सोल्यूशन, बट यस, क्रिटिकल थिंकिंग जो लोग गलत होते हैं ना, वो हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं और उनकी एंड रिजल्ट नेगेटिव ही होती है। जैसे कि कल भी हम जब डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने इस बारे में बात की थी कि जैसे जो लोग गलत होते हैं, चोर होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं वगैरह, ये जो लोग होते हैं उनकी सोच ही नेगेटिव होती है। तो वो जो क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, भले ही वो पूरे डेटा एनालिसिस सबके साथ कर रहे हो, लेकिन काम तो वो गलत कर रहे हैं। उनका भले ही जो रिजल्ट है, एंड रिजल्ट है, वो पॉजिटिव निकलता है, वो अच्छे से चोरी भी कर लेते हैं, बैंक में डाका भी डाल देते हैं, पहुंच भी जाता है, पैसे आ जाते हैं उनके पास, लेकिन एंड रिजल्ट जो उनका एक्चुअल में होता है वो नेगेटिव होता है। लेकिन अगर क्रिटिकल थिंकिंग को पूरा आप एनालाइज करो, व्हेन यू डिसाइड ऑन मेकिंग अ डिसीजन, तो आप जो प्रोसेस स्टार्ट करते हो, वो जैसे ही मैंने बताया, वो एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग, और उसका रिजल्ट नेगेटिव नहीं हो सकता। सो एक्चुअली में क्रिटिकल थिंकिंग कैन नॉट बी नेगेटिव। Right. Okay. Right. Or Yeah. another thing I Okay, wanted to okay. ask. And I think considering the situation, I would I would request. Thank you, Fiza. Thanks for your support, Fiza Fatma, and hope we will see you in the next session. Right? यस Thank you. Inshallah. इंशाल्लाह। Thank you. थैंक यू Thank सो you very मच much. लियाकत भाई। Thank you. Most welcome. Okay, take care. Allah Hafiz. जी फिजा, तो आई वुड जस्ट लाइक कि हम सेशन के थोड़े से कुछ की पॉइंट्स हैं जो फर्दर एक्सप्लेन कर सकें। एक तो है रेज्यूमे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा Right. कंसर्न है कि आप जो क्रिटिकल थिंकिंग कीवर्ड हैं जब अपना सीवी बनाएं, तो इसमें जो एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी, उस तरह के आप वर्ड शो कर सकते हैं। तो ये आपकी जो वर्क हिस्ट्री है उसको डिस्क्राइब करते हुए प्रॉपर शो कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्किल्स हैं, आप फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी कैरियर समरी शो कर रहे हैं, तो उसमें आप अपनी स्किल्स को जिस तरह इस एग्जांपल्स में वर्ड शो दिए गए हैं, एक एग्जांपल इस तरह से या इस तरह के सिमिलर वर्ड्स से शो कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो जो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं,
तो इंटरव्यू के दौरान भी आप इसी चीज को हाईलाइट कर सकते हैं और अपने आप को एक क्रिटिकल थिंकर जो है वो प्रूव कर सकते हैं। तो ये कुछ फर्दर एस्पेक्ट से क्रिटिकल थिंकिंग के जॉब सीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, लिंक्डइन पे डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं, और उसमें शॉर्ट कोर्सेज भी हैं, लॉन्ग कोर्सेज भी हैं क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। तो इन पे भी आप कर सकते हैं। तो राइट। फिजा, आप फर्दर इस टॉपिक पे कुछ अगर ऐड करना चाहें तो इट्स ओवर टू यू। नहीं, आई थिंक हम द स्पीकर्स वी हैड टुडे, उन्होंने बहुत ब्रीफली बहुत अच्छे से हर चीज़ को एक्सप्लेन किया, द एग्जांपल्स दे गेव, तो आई थिंक दे कवर्ड द टॉपिक बहुत अच्छे से। राइट। तो विद दिस नोट वी विल से गुड बाय फॉर दिस सेशन। स्टे इन टच, और आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट फर्दर जो है सेशन देखना चाहेंगे। तो अकॉर्डिंगली वी विल प्लान अनदर सेशन। थैंक यू, इंशाल्लाह। टेक केयर।